Hello students, welcome to today's English class. Today we are going to start Unit 12 of our English practice book, Reflexive or Emphasizing Pronouns. We know what is a pronoun. About pronouns you have learned in your previous classes. A pronoun is a replacing word. The word that replaces a noun is called a pronoun. We know that, and this is a next type of pronoun, reflexive or emphasizing pronoun. So let's get started. What is a reflexive or emphasizing pronoun? We know that pronouns, personal pronouns are I, you, he, she, it, we, they, and you. So these are personal pronouns. We know about them. हम अपने आप के लिए प्रोनाउन यूज़ करते हैं आई. यू इज़ यूज्ड फॉर द लिसनर, जो हमारे सामने हैं उनके लिए हम यू यूज़ करते हैं. देन ही, शी, इट आर थर्ड पर्सन प्रोनाउन जब हम किसी और की बात करते हैं. इफ़ ही इज़ अ मेल देन वी यूज़ ही, और फीमेल है तो हम उनके लिए शी यूज़ करते हैं. कोई नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं तो इट लगाते हैं. और वी हम यूज़ करते हैं जब एक से ज़्यादा हम अपनी बात कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों की. हिंदी में जब हम बोलते हैं देन इंग्लिश में हमारा हो जाता है वी. देन दे इज़ यूज्ड फॉर जब कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन हमारा प्लूरल होता है. जब हम एक से ज़्यादा लोगों की या एक से ज़्यादा चीज़ों की बात करते हैं तो हम दे यूज़ करते हैं. और यू जब हमारे सामने एक से ज़्यादा पर्सन्स हैं तो उनको भी हम यू से ही प्रोनाउन करते, यू ही यूज़ करते हैं उनके लिए भी, और यू वो प्लूरल में हो जाता है. सो दीज आर द पर्सनल प्रोनाउंस, वी ऑलरेडी नो दैट. और जो आज हम लर्न कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, तो इन्हीं पर्सनल प्रोनाउन जब हम रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन की तरह यूज़ करते हैं तो वो हो जाते हैं. आई का हो जाता है माई सेल्फ, यू से बन जाता है योर सेल्फ, ही हिम सेल्फ, शी हर सेल्फ, इट इट सेल्फ, वी आवर सेल्व्स, दे देम सेल्व्स, एंड यू योर सेल्व्स. We add self self or selves selves to make reflexive or emphasizing pronoun. For singular pronoun we use self, and for plural pronouns we use selves. So these are reflexive or emphasizing pronouns. So let's see how they are used in sentences. Read the following sentences. First is the use of reflexive pronouns. Sometimes these are used as reflexive and sometimes they are used as emphasizing pronouns. Let's see the difference. Look at the first sentence. Rahul hurt himself while playing in the ground. I introduced myself to the teacher. We enjoyed ourselves in the party, and you should take care of yourself. So in first four sentences, the pronoun himself, myself, ourselves, and yourself are used as reflexive pronouns, and the other use of these pronouns is emphasizing pronouns. Look at the sentences. He himself solved all the sums. My mother herself baked the cake. The blind man crossed the road himself, and the children prepared for the dance competition themselves.
In first four sentences, himself, myself, ourselves and yourselves, these four pronouns are the receiver of the verbs. जो verb है sentence में, उनका उन एक्शन को रिसीव कर रहे हैं ये प्रोनाउंस. सो दे आर यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब्स. सो दे आर यूज्ड एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. एंड इन द लास्ट फोर सेंटेंसेस, himself, herself, himself and themselves, they have been used to emphasize the action of the subject. Means he himself solved all the sums. कि उसने खुद ने सम सॉल्व किए. एक्शन था हमारा सॉल्व और ऑब्जेक्ट है वो है सम्स. ही सॉल्व द सम्स. और हिमसेल्फ इज यूज टू एम्फेसाइज द सब्जेक्ट कि ही हिमसेल्फ, उसने अपने आप सारे सम सॉल्व किए. माई मदर हर सेल्फ बेक द केक, मेरी मम्मी ने खुद ने केक बनाया. वर्ब इज के बेक और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज केक, बट हर सेल्फ इज यूज्ड एज द एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन. कि मदर को सब्जेक्ट, जो इसमें माई मदर जो सब्जेक्ट है सेंटेंस में, उसको एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ हुआ है हर सेल्फ. सो sometimes these pronouns, the form of the pronouns is same, but sometimes they are used as reflexive pronouns and sometimes they are used as emphasizing pronoun. So we shall learn more about these pronouns in our chapter. So you can open your books on page number 102. Let's start the unit. So the difference between reflexive and emphasizing pronoun is that reflexive pronoun is used in a sentence when the subject and object are same. It means that the action in the sentence is received by the subject itself. When the pronoun is the object of the action, look at the example. I looked myself in the mirror. I और myself, I subject है और myself is the object of the action looked. कि I looked, मैंने देखा किसको, myself, अपने आप को, in the mirror. So it is used as reflexive pronoun. And emphasizing pronoun is simply used in a sentence to emphasize the action of the subject. As I just told you in the previous sentences, the sentence is complete even if we remove it from the sentence. कि अगर हम emphasizing pronoun को sentence में से remove भी कर देते हैं, then तो भी हमारा sentence complete है. Look at the example. My mother herself cleans the house. कि अगर हम इस herself को remove भी कर दे sentence में से, My mother cleans the house, मेरी मम्मी house clean करती है. और herself is used to emphasize the subject mother. Mother, my mother, कि मेरी मम्मी खुद clean करती है house. तो here it has been used to emphasize, जोर दे के कहा गया है, insist किया गया है कि my mother, कि मेरी मम्मी खुद घर साफ करती है. तो here it is used as emphasizing pronoun. But in the first sentence, reflexive pronoun को हम sentence में से remove नहीं कर सकते, because in that sentence the pronoun is the object of the action. Is I looked in the mirror, then it will be an incomplete sentence. I looked के बाद किसको देखा, I looked what, I looked myself in the mirror. So it is used as reflexive pronoun. When the pronoun is the receiver of the action, then it is reflexive pronoun, and when the pronoun is used to emphasize the subject, then it is a emphasizing pronoun. So let's start our unit.
page number 102 of your English reader. Worksheet number 1. In Unit 4 comparison of this book, you read about the explorer Bernard Bugis, who undertook an expedition to Siberia and discovered the carcass of a woolly mammoth from frozen snow. Given below is the series of statements given by Bernard as he is being interviewed after his return from Siberia. As you read the statements, fill in the missing words. Use the aid box given below. We read about Bernard Bugis and his expedition to Siberia in Unit 4 of this book. Comparison में हमने पढ़ा बर्नार्ड बुगीज़ के बारे में. एंड व्हेन ही केम बैक फ्रॉम द एक्सपीडिशन, जो अपने एक्सपीडिशन से जब वो वापस आए तो उन्होंने इंटरव्यू में क्या बताया. लेट्स सी व्हाट ही टोल्ड. वी हैव सम pronouns in the aid box: himself, itself, themselves, myself and ourselves. So let's use them in the sentences to complete. Bernard Bugis said that, sentence number 1, I myself saw the tusk of woolly mammoth coming out of the snow. I subject है और उसका pronoun हो जाएगा myself. Second sentence, the two men from the Dolgan tribe. कि Dolgan tribe वहाँ के जो two men, they helped them and they themselves came with me to show me the tusk. कि बर्नार्ड बुगिस ने बताया कि two men from the Dolgan tribe themselves came with me to show me the tusk. Two men plural है ये सब्जेक्ट हमारा, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हमारा प्रोनाउन हो गया themselves. We took out the carcass of the mammoth buried in the permafrost along with 70 scientists. We से प्रोनाउन हो गया हमारा ourselves. We ourselves took out the carcass of the mammoth buried in the permafrost along with 70 scientists. Then sentence number 4, as the huge Russian helicopter raised itself. अब Russian helicopter यहाँ पे सब्जेक्ट है और इसके लिए हमारा प्रोनाउन हो जाएगा itself. Raised itself and there was tension all around as the block weighed more than 23 tons. So to use these reflexive or emphasizing pronoun, we have to first see the subject of the sentence. According to that, we choose the emphasizing or reflexive pronoun. Let's move to the last sentence of this worksheet. Move to the next page, page number 103. Sentence number 5. Bernard himself went in the helicopter to Katanga airport. In this sentence, Bernard is the subject और Bernard के लिए हमने यूज़ कर दिया reflexive pronoun, sorry, emphasizing pronoun है ये. Himself went in the helicopter to Katanga airport. The permafrost is now being melted by more than 100 hair dryers. So all the words that you have filled in are pronoun ending with self or selves. They are either emphasizing pronouns or reflexive pronouns. तो self और self से जो end हो रहे हैं ये सभी words, they are called emphasizing or reflexive pronouns. In sentence 1, 2, 3 and 5, we have used emphasizing pronouns, while in the sentence 4, the pronoun itself is a reflexive pronoun. Emphasizing pronouns and reflexive pronouns have same form. दोनों की same form होती है. The following pronouns can be used either as emphasizing pronoun or as reflexive pronoun. तो sentences में या तो वो emphasizing pronoun की तरह यूज़ होते हैं या reflexive pronoun की तरह यूज़ होते हैं. तो how you will come to know that whether this pronoun used is emphasizing or reflexive? So what you have to remember,
that a pronoun used to convey emphasis is called an emphasizing pronoun. अगर किसी सेंटेंस में जो प्रोनाउन यूज़ हुआ है वो एम्फेसाइज करने के लिए, सब्जेक्ट का एक्शन एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, then it is an emphasizing pronoun. Look at the examples. I myself locked the door. Second sentence, you yourself asked for this transfer. In these two sentences, the pronoun myself and yourself दोनों यूज़ हुए हैं एज ए एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन. सब्जेक्ट एम्फेसाइज कर रहे हैं अपने आप को, लाइक आई माई सेल्फ, मैंने खुद ने डोर लॉक किया. और अगर हम माई सेल्फ को रिमूव भी कर दें, आई लॉक द डोर, देन ऑल्सो द सेंटेंस इज कंप्लीट. सेकेंड सेंटेंस देखो, यू योर सेल्फ आस्क्ड फॉर दिस ट्रांसफ़र, कि तुमने खुद ने ही इस ट्रांसफ़र को मांगा था. तो अगर हम योर सेल्फ रिमूव भी कर दे, देन ऑल्सो द सेंटेंस इज कंप्लीट. यू आस्क्ड फॉर दिस ट्रांसफ़र, sentence is complete. So in these two sentences, the pronoun myself and yourself are emphasizing pronouns. Let's see two more example. When the pronouns like myself, yourself, herself are used as the receiver of an action, they are called reflexive pronoun. जब यही pronouns as the receiver of the action यूज़ होते हैं सेंटेंस में, देन दे आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. मीन्स जो वर्ब होती है सेंटेंस में, अगर उस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये प्रोनाउन है, देन इट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. सी द एग्जाम्पल, आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर माई डिफीट. अब वर्ब इसमें है ब्लेम. आई ब्लेम, किसको ब्लेम कर रहा है? अपने आप को. आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर माई डिफीट. So here the subject and the object are same. I is the subject and myself is the object. Then it is the reflexive pronoun. Next is she presented herself before the committed. She presented whom? किसको present किया? अपने आप को. तो she और herself दोनों same है. She is the subject and herself is the object of the action presented. So it is reflexive pronoun. Let's see some more example in the next worksheet. Move to the next worksheet, worksheet number 2. Work with your partner using the reflexive pronouns that you just read. Complete the following sentences. The first sentence is, the money plant wraps itself around the trunk. कि मनी प्लांट जो है वो किसको रैप कर लेता है? अपने आप को. तो here itself is the receiver of the action. wrap is the action word, verb है इसमें, और इसको ऑब्जेक्ट क्या है? किसको रैप करता है? अपने आप को. तो itself is the object of the sentence. So it is reflexive pronoun. He introduced himself to me. He से हो गया himself. Behave yourself or you will be punished. कि behave yourself, otherwise you will be punished. You से हो गया yourself. I enjoyed myself in the company of friends. I से हो गया myself. I enjoyed myself in the company of friends. Next is, she availed herself of the opportunity. She availed what? She availed herself. तो avail verb है और उसका object है herself. She से हमारा pronoun बन जाता है herself. So it is also used as reflexive pronoun. The dog hurt itself or himself. डॉग के लिए हम इट प्रोनाउन भी यूज़ करते हैं और हिम भी यूज़ कर लेते हैं. तो दोनों ही ठीक हैं. इट सेल्फ भी लगा सकते हैं और हिम सेल्फ भी यूज़ कर सकते हैं. ही हिड हिम सेल्फ बिहाइंड अ कर्टन. ही से हो गया प्रोनाउन हिम सेल्फ और
he hid himself behind the curtain. कर्टन के पीछे उसने अपने आप को हाइड कर लिया, मतलब छुपा लिया. तो हियर इज, तो ऑल दीज pronouns in this worksheet have been used as reflexive pronouns. They are the receiver of the actions in each sentence, so they are reflexive pronouns. Worksheet number 3, given below is a list of do's and don'ts that Kriti's parents tell her. Complete the list with suitable reflexive pronouns. कृति के पेरेंट्स उसको कुछ एडवाइस कर रहे हैं. लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, यू शुड लुक आफ्टर योर सेल्फ, यू आर ग्रोन अप नाउ. अब कृति यू सिंगुलर है तो उसको कह रहे हैं यू शुड लुक आफ्टर योर सेल्फ. सेकेंड सेंटेंस, डोंट प्ले विद ए नाइफ, यू विल हर्ट योर सेल्फ. कि यू शुड नॉट प्ले विद ए नाइफ, चाकू से नहीं खेलो. यू विल हर्ट योर सेल्फ, नहीं तो आप अपने आप को चोट पहुँचा लोगे. थर्ड सेंटेंस, लर्न टू बिहेव योर सेल्फ. यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है कोई, लेकिन वी नो दैट पेरेंट्स आर टॉकिंग टू देयर डॉटर, टू कृति, एंड शी इज़ इन फ्रंट ऑफ देम, सो प्रोनाउन हो जाएगा योर सेल्फ. So that's all for today. Hope these pronouns, reflexive or emphasizing pronouns, are clear to you and you will be able to complete your book exercise worksheet number 1, 2 and 3. Rest of the lesson we shall do tomorrow. Thanks and have a nice day.